Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 series session. So guys, today's session is a little bit different from the regular sessions as today we will be revising everything that we have covered in the past 5 sessions of the CT 360 series. तो ये सेशन उन सभी तीनों एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें पहले एस्पिरेंट वो हैं जिन्होंने अभी तक अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और लास्ट 5 सेशंस हमारे नहीं देखे। तो इससे क्या होगा कि वो सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर कर पाएंगे जो हमें कवर करनी है इन न्यूज आर्टिकल से। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द एस्पिरेंट्स हु हैव बेसिकली watch these particular sessions but they have not revised them, right? So basically यहाँ पर आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। Now the third कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स इज दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने हमारे सारे सेशंस को देखा है और रिवाइज भी किया है। तो उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आज के सेशन से कि क्या वो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाए हैं, क्या उनको वो सारी डायमेंशंस याद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हैं जो उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए। एंड दैट वी विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ टॉप 50 MCQs फ्रॉम द जनवरी 2025 विच इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो आज का जो रिविजन सेशन है ये जनवरी 2025 का पार्ट 1 है। आई होप गाइस कि आप सभी काफी हैप्पी हेल्दी है और आप सभी की प्रिपरेशंस काफी अच्छी चल रही है। अगर मैं बात करूं आज के सेशन की तो ये एक रैपिड फायर सेशन होगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में सभी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेकर चलना है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन यहां पर आएगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड थिंग इज आपको क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके वहां पर मार्क करना है कि आपने क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया, इनकरेक्टली आंसर किया, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएं कि आउट ऑफ 50 व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्कोर इज। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट्स अभी आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं कि किस किस ने इस सेशन की अच्छे से रिवीजन की है। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, इफ यू आर स्टिल न्यू टू योर यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द कोर्सेज एंड वीडियोज ऑफर्ड बाय अस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको हमारे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और काफी इजी क्वेश्चन है गाइस। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक पोर्टल को लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड कनेक्ट इंडियन लॉ एनफोर्समेंट विद इंटरपोल्स नेटवर्क। गाइस हम जानते हैं इंटरपोल का नेटवर्क। सो बेसिकली काफी सारी कंट्रीज हैं जो इसका member है, more than 190 countries are the part of the Interpol network और basically what they do is they exchange information about the criminals, right? So similarly let me tell you that a portal has been launched by the Central Bureau of Investigation and you are required to tell me what is the name of this portal which will be strengthening international crime investigations and connect the Indian law enforcement with the Interpol, right? So what is it? So guys, इंटरनेशनल लेवल पे है हमारा इंटरपोल। सो इंडिया के लिए क्या होगा, भारत के लेवल पे होगा भारतपोल, राइट? सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्टली आंसर किया है गाइस, आपको मिलता है +1 मार्क्स और आप अपने ब्लैंक पेपर पे वहां पर डालिए कि आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस भारतपोल पोर्टल की, सो बेसिकली कुछ 5 मॉड्यूल्स हैं जो इसके अंदर लॉन्च किए गए, विच इंक्लूड्स कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड द रिसोर्सेज। सो ये हमारे 5 मॉड्यूल हैं इस भारतपोल पोर्टल के, right? So together they will be providing technological platforms so that Indian agencies can share information and they can also request information from the Interpol about the different criminals, right? And this is going to assist the state police forces by facilitating collaboration with the law enforcement agencies. As I told you that in the Interpol there are more than 195 countries, more than 190 countries which are the members. So basically Interpol की 195 countries members हैं। ठीक है, एंड नाउ आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेस दैट वेयर एग्जैक्टली द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो बिफोर मूविंग अहेड गाइस, लेट मी टेल यू दैट व्हाट आर दीज 5 मॉड्यूल्स। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पहले मॉड्यूल की, दैट इज द कनेक्ट। सो दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू, with the help of this module, all the law enforcement agencies, they will function as an extension of the Interpol National Central Bureau. So guys, National Central Bureau, so basically ये हमारा अभी एक एक्सटेंशन था। अब क्या होगा कि ये हमारा बेसिकली मेजर नोड थी उस नेटवर्क की। अब क्या होगा कि
इसके साथ साथ एक एक्सटेंशन हमारा हो गया है नेटवर्क का। कैसे? क्योंकि हमारी जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, बाकी की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी इस पोर्टल के जरिए और इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती हैं थ्रू द इंटरपोल, राइट? नाउ गाइस, नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरपोल नोटिसेस. So this will ensure quick, secure and structured transmission. Guys, very important thing is that whenever Interpol basically send some notices, so that is to the Indian organizations ki you have to tell us the details about this particular criminal, right? Or some other details that they are asking. So basically from those requests it is really important जो ट्रांसमिशन है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, वो काफी क्विक हो, सिक्योर हो और वहां पर कोई इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो. So वहां पर काम आएगा आपका Interpol notices. Third one is Interpol references, which is again it will make it simpler to seek and provide international assistance. इसमें क्या है कि हम international assistance ले भी सकते हैं और साथ ही साथ बाकी countries को दे भी सकते हैं. After that we are having broadcast module. तो हम कैसे immediately जो असिस्टेंस है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल. देन रिसोर्सेज मॉड्यूल इज देयर विच विल फैसिलिटेट एक्सचेंज, जहां पर हम कैसे एक्सचेंज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, एंड वी विल बी मैनेजिंग इन केस सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो ये भी इसका पार्ट रहेगा. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कवर. 5 की मॉड्यूल्स ऑफ भारत पोल पोर्टल, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर, राइट? अगर आपको इस सेशन का कंप्लीट और डिस्कशन चाहिए इस टॉपिक का, तो आप डेफिनेटली हमारे प्रीवियस सिटी 360 सीरीज सेशन को विजिट करिए. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक. सो आई विल नॉट बी गोइंग हियर. What is the duration of India Energy Week? That is what you have to identify here. You can see the options. Try to identify the correct answer here. When we talk about this week, it will be organized by the Federation of Indian Petroleum Industry. So Indian Petroleum Ministry basically इसको Federation of Indian Petroleum Industry organize करती है under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. And what exactly is the duration of this week? The duration of this week is from 11th to 14th of February 2025. That is the right answer. Moving to the next question, guys. So I already told you that this is going to be a rapid fire session because we have already had a detailed discussion about these news articles. Now the next question is, who among the following was recognized as the world's oldest person by Guinness World Record but passed away at the age of 16? Let me tell you that she is from Japan and the name of that particular person is Tomiko Ituka. So Tomiko Ituka is that person who was earlier recognized by the Guinness Book of World Record as the world's oldest person, and she has passed away recently. Now moving to the next question, guys. So next question is about the Bhashini enabled eShram portal. So you have to identify the correct statements which are mentioned here about the Bhashini enabled eShram portal. So guys, we all know about eShram portal. It is that particular portal which basically unites the employers and the unorganized workers. It is the place where unorganized workers get themselves registered, right? Apart from that, this portal also provides the details about the securities, about the different schemes to which the unorganized workers can avail the benefits, right? So these are really very important for the unorganized workers, and as a part of the eShram portal they are also being given Shramik card, राइट? सो गाइज, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है कि आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, after the integration of Bhashini with the eShram portal, it will now support all 22 scheduled languages, making it more user friendly and accessible. Guys, basically let me tell you that Bhashini जो है, Bhashini will basically provide the eShram portal details in the different languages and it will be there in the 22 scheduled languages, right? So Bhashini को जब हमने eShram portal के साथ integrate किया, so basically earlier only few languages were there in the eShram portal. Like you can only access this particular portal in only 3 to 4 languages, but now with the integration of Bhashini, now that portal is basically available and can be accessed in the 22 scheduled languages, and that's how we will be able to break the linguistic barriers which exists, right? So the Bhashini project launched under the Ministry of Labor and Employment leverages AI models for language translation. Guys, let me tell you that this Bhashini project is not under the Ministry of Labor and Employment.
It is under the Ministry of Electronics and Information Technology. That's why the statement is incorrect. Third statement, that Bhashini, which is a national language translation mission, it was introduced in July 2022 to address language barriers through technology. We all know that again, the same thing has been done by Bhashini when it has been integrated to eShram portal, right? As it is able to break that linguistic barrier, and with the help of this, unorganized workers will be able to access this portal. More unorganized workers will be able to access this eShram portal. So which of the following is correct here? Statement number 1 and 3, that means option C is the right answer. So option C is the right answer to this question. Let's move on to the next question. Next question is about the theme of Aero India 2025. So guys, 15th edition of Aero India 2025 was being organized by the Defense Exhibition Organization, and I told you that whenever such kind of event is taking place, we need to cover that what is the theme of such event. So here the themes are being presented here. You have to tell me what is the right answer. When we covered this news article, I told you we're talking about Aero India 25. Basically it is a kind of one-stop platform where the different people from the aviation, they just come together and they basically discuss about the, and they explore the फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अबाउट द एविएशन सेक्टर, राइट. सो बेसिकली अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर, ये हमें बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. सो और हमारा एरोप्लेन कहां पर चलता है? रनवे पे चलता है, राइट. So what will be the right answer? That is the runway to a billion opportunities. Option C is the right answer to this question. So that is absolutely right. And when we talk about Aero India 2025, it was organized at Air Force Station Yelahanka in Bangalore, Karnataka. Let's move on to the next question. The question is on the prestigious Asia President Forum that will be hosted for the first time in India during the 8th edition of Indus Food 2025. Indus Food 2025 is one of the largest such kind of event. So you have to tell me that this has been launched in partnership with which of the following organization. When we talk about this event, it will bring together different industry leaders and experts from across the food and beverage sector. तो food and beverage sector से different stakeholders को ये एक साथ लेकर आएंगे, and they can once again basically talk about the food and beverages and how we can basically explore more opportunities, how we can enhance and boost the productivity of this sector. So with which organization it was being launched? That is, it was being launched by Trade Promotion Council of India. So option C is the right answer. This was held from 8th, 9th, 10th January 2025 in Noida. ठीक है, नोएडा में ये इवेंट हुआ था. That is Indus Food 2025. Let's move on to the next news article. So next news article is on the 82nd Golden Globes Award, which was held in December 2024. And you have to tell me the name of that person who has made history as the first Indian filmmaker to be nominated for Best Director for an Indian film. Let me tell you guys, basically this personality has created a history as she was nominated for a critically acclaimed movie, that is All We Imagine as Light. And she is the first such Indian filmmaker to be nominated for Best Director for an Indian film, right? So what exactly is the name of that person? The name of the person is Payal Kapadia. So option C is the right answer. Payal Kapadia is that person who has created such history as she became the first Indian filmmaker to be nominated for Best Director. तो किस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस. आई बिलीव कि आप सभी अपने अपने ब्लैंक पेजेस पर नोट डाउन कर रहे हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्टली किया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्टली दिया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए. और अगर आपने सेशन नहीं भी देखा है तो भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर कमेंट कीजिए, बिकॉज अगर मान लीजिए इनकेस आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सही किया था ड्यूरिंग द सेशन. अगर गलत होता है तो एक लर्निंग होगी और आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने तब ये किया था जब सेशन चल रहा था. एंड व्हेन आई विल बी सिटिंग इन द एग्जाम दैट टाइम आई विल सी दैट ओके, अब तो मुझे पता ही है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है. ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस देगा आपको और एक मेमोरी क्रिएट करेगा आपके माइंड के अंदर. तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इन सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस. सो अगला क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 Dash has introduced the Dash, which is a multi-layer clothing system. guys, एक multi-layer clothing system बनाया है which is going to provide प्रोटेक्शन इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस. अगर हम बात करें इस सिस्टम की तो इसकी जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस. आपके सामने बहुत इजी सा सवाल है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है और इसका नाम क्या है, इस क्लोथिंग सिस्टम का नाम क्या है. गाइस, तो ठंड कहां पड़ती है, वेयर एग्जैक्टली दिस कोल्ड कंडीशंस आर इन द हिमालयाज. सो
this system will be acting as a kavach, as a protector for these people who will be there, right? And it is also going to be very helpful in the military operations. So what can be the name? Him kavach, right? Himalayas पे जो कवच इस्तेमाल होगा, the kavach that will be used in the Himalayas, that is him kavach, to stay protected from the extreme cold conditions. So him kavach is the right answer, and DRDO is that organization which has come up with this particular him kavach. That is absolutely right. Now let's move on to the next question. Next question is about the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform, which was unveiled during the Bharat Climate Forum 2025. We all know Bharat Climate Forum 2025 was recently held and organized in New Delhi. So during that, Bharat Clean Tech Manufacturing Platform was also been launched. Let me brief you a little bit about that. See guys, we all know that there are a lot of production linked incentive schemes are going on, right? Where we are providing where we are incentivizing the players for increasing their production. But the government says that this model of providing the subsidies or incentivizing the players, basically it is not a sustainable model. We cannot do it for the very longer period of time, right? As an initial kick it is important, but we should not just stay relied on this particular subsidy or incentivization, right? Or the incentives. So we have to create such a kind of model where we are not requiring any such kind of subsidies and we are boosting our productivity on our own. So इसके लिए ये भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया. अब आप पढ़ सकते हैं तीनों स्टेटमेंट्स को, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो इट इज एन इनिशिएटिव टू एनहांस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन इन द सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स. Second statement, it will be dedicated to unify stakeholders from policy, industry, finance and research to accelerate clean tech manufacturing in our country. Third statement, it will be providing an opportunity for the Indian firms to collaborate, co-innovate and provide a platform for financing to share ideas, technologies and resources, right? So these are the three statements we are required to identify incorrect statement. So here guys, the right answer is basically option E, that is none of the above, as all these statements are absolutely right with respect to Bharat Clean Tech Manufacturing Platform. That is the right answer. Let's move on to the next question guys. So next question is about South India's first infectious disease research and diagnostic laboratory, and you have to tell me that the Medical College and Research Institute of which of the following cities has been chosen by ICMR for the establishment of South India's first infectious disease research and diagnostic laboratory. Let me tell you guys that what exactly used to happen earlier was that if some kind of new infectious disease has been found out, so these are being used to send to the samples are required to be sent to the other cities where this infectious disease research and diagnostic laboratory was there. For example, if that particular place is Bengaluru, so Bengaluru is not having any kind of such kind of IRDL, that is infectious disease research and diagnostic lab. So it used to send its samples to the Pune laboratory where they are being evaluated, and then the report has been sent to Bengaluru. Then it was supposed to take the action. But what if Bengaluru is having its own IDRL, right? So that will be a win-win situation for Bangalore. So that's why Bangalore Medical College and Research Institute has been chosen by Indian Council of Medical Research to establish this infectious disease research and diagnostic laboratory, and this laboratory in Bangalore will be the South India's first such laboratory. And here option is right answer is option C, that is Bangalore. Moving to the next question. So consider the following statements about the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in Odisha. Okay, so guys, we have recently seen that we know that earlier in Odisha Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not being implemented, but now National Health Authority and State Health Agency have signed an MOU with the help of which now this particular scheme will also be implemented in Odisha. So now we have to go through these statements, identify the correct statement among them. First statement, it has become the 34th state to implement, Odisha has become 34th state to implement ABPMJAY. Second statement, it will provide health cover of 10 lakh per family per annum. Guys, if we talk about Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, I always tell you, just remember the 5 rule, right? So it only provides 5 lakh per family
per annum and not the 10 lakhs. So this statement is incorrect. Third statement is that implementation will be done in convergence with Gopabandhu Jan Arogya Yojana in Odisha. Absolutely. So right now guys, what exactly was happening, that instead of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Odisha was having its own scheme, that is Gopabandhu Jan Arogya Yojana, and now we will be converging this scheme with the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and we will be implementing both schemes in convergence. So that's why third statement is also right, first statement is also right. So right answer will be option A, that is only 1 and 3. आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे होंगे, क्योंकि हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियाज इंक्लूजन। Guys, we all know about the United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics, right? So we all know that this big data, artificial intelligence, machine learning are emerging technologies, and what if we will be including these technologies in our official statistics? So that's why this particular committee was been set up, and now India has also joined this particular committee. And here we are having three statements. We are required to identify correct statement about this particular topic. So the first statement is that India has joined the UNCEBD to shape global standards and practices in a big data and data science for official statistics. Absolutely right. When India will be joining it, India is going to shape the global standards. India will give its contribution to frame the rules, right? Then the committee was established in 2014 to explore the benefits and challenges of big data, including its role in monitoring sustainable development goals. Absolutely right. Let me tell you guys that this committee was established and the first chair of the committee was Australia, right? Now moving ahead, so UNCEBD is led by one chair from Denmark and two vice chairs from South Africa and UK. Let me tell you guys, there is something incorrect here in the chairs of this UNCEBD, and that's why the right answer will be statement number 1 and 2 are correct. Option A is the right answer. When we talk about the chair, so South Africa is presently the chair, having the chair of UNCEBD, while the two vice chairs are Denmark and UK. This is the right answer. Okay, so that's why the third statement was incorrect. I hope ki you are able to understand this point and you are able to also retain this particular part. Let's move on to the next question. So as per the report published by Union Ministry of New and Renewable Energy in January 2025, what percentage increase has been observed in India's total renewable energy installed capacity? We all know that India is having a target of achieving net zero carbon emission free country by 2070. That's why so many number of renewable energy installed capacity projects we have installed in our nation, and that is why, my dear friends, let me tell you that now we are really able to increase the India's total renewable energy installed capacity. And when we talk about the percentage increase, so that is 15.84%, with which we have increased this installed capacity, and that's why option C is the right answer. Moving to the next question, guys. Next question is about the Animal Husbandry and Animal Welfare Month. So recently, Department of Animal Husbandry and Dairying has declared that we will now be celebrating Animal Husbandry and Animal Welfare Month. So we have to identify the duration of this month. Let me tell you that it will be celebrated from January 14 to February 13, and that's why option B is the right answer. Moving to the next question. Next question is about the National Youth Day that we celebrate every year to mark the birth anniversary of Swami Vivekananda ji, who was a Indian philosopher and a thinker, and his birth anniversary comes on 12th of January. So on 12th January every year we celebrate the National Youth Day. Option C, 12th January is the right answer. Next question. So guys, we all know that whenever there is a National Youth Day, earlier there was a tradition of celebrating the National Youth Day with the National Youth Festival. But now the government of India has basically made some twist to this particular celebration. They just said that why are we basically organizing this National Youth Festival? Why not we just mobilize the youth to basically help the government in its target of becoming Viksit Bharat by 2047, in making India developed nation by 2047. So that's why they have just asked the students and the youth ki please come forward with the ideas, share your ideas by which we can really become a developed nation by 2047. So which organization or which body will be coming up with this kind of event? That is the Viksit Bharat Young Leader Dialogue. So this is the dialogue which was being launched instead of National Youth Festival. So guys, when I talk about this part,
वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ, सो यूथ रिलेटेड जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री होगी वो इसके लिए काम करेगी. सो हियर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इज द डिपार्टमेंट विच हैज लॉन्च द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025. दैट इज द राइट आंसर. Next question. So, which former Bangladesh captain has announced his retirement from international cricket for the second time? What is the name of this player? The name of the player is Tamim Iqbal. Option D is the right answer. Next question. The Animal Welfare Board of India, which is a statutory body of the Department of Animal Husbandry and Dairying, it has signed an MOU with which of the following organizations to provide high quality professional legal training. तो guys, professional legal training हमें उन सिविल सोसाइटी मेंबर्स को देनी है जो सपोर्ट करते हैं एनिमल वेलफेयर को. और लीगल ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? जब एक लॉ यूनिवर्सिटी के साथ आप जुड़ेंगे. तो वो कौन सा लॉ यूनिवर्सिटी है? दैट इज नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन हैदराबाद, विद विच एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU, एंड दैट इज द राइट आंसर. Next question. On the Ministry of Labor and Employment celebrated the Hindi fortnight from 14 to 29 September 2024. So the question is, what is the primary aim of this initiative? इस initiative का primary aim क्या था? Let me tell you guys, हम हिंदी fortnight basically celebrate कर रहे हैं. Why? So that we can enhance the usage of Hindi language in the official work. So basically, with the help of Hindi fortnight, Ministry of Labor and Employment has tried to promote progressive use of official language Hindi in the official work. So option C is the right answer. So guys, yes, we are going rapid fire in this session. As I already told you that this session is going to be a rapid fire one. Second thing, wherever the explanation is required, I am providing you all the explanations as well, right? Even in this news article, I have given you the additional information. So I hope that you guys are really very much comfortable with the pace of this session. And if not, guys, let me tell you that when you will be appearing in your when I take the example of RB Grade B officer exam, in just 25 minutes you are required to solve 80 questions, right? So we have to pace up ourselves and we have to make sure that yes, we are reading the question and answering the answer, right? So with the same energy, we will be moving ahead in this session. Let's move on to the next question. Next question is about which Indian Army veteran who is also known as the Lion of Naushera, who passed away recently. He also served as a dispatch runner in the Indian Army. So the name of this person is Havildar Baldev Singh. So guys, सीधा Lion of Naushera पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए हवलदार बलदेव सिंह जी की बात हो रही है, जिनमें बहुत ज्यादा बल था और इन्होंने अपने सारे काम एज आर्मी वेटरन बहुत अच्छे से किए और दैट्स व्हाई इनको कहा जाता है लॉयन ऑफ नौशेरा. ठीक है, सो दैट इज राइट आंसर. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. सो विच एमिनेंट प्लेबैक मलयालम प्लेबैक सिंगर हु इज द रेसिपिएंट ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इन 1986 has passed away recently? You have just required to identify the name of this person. क्या है इस पर्सन का नाम? He is basically P. Jayachandran, the Malayalam playback singer who passed away recently. Next question. So which Indian athlete has been named the best male javelin thrower in the world in 2024 by American magazine Track and Field News? So American magazine Track and Field News has declared this person as the best male javelin thrower in the world. So if we talk about the most famous javelin thrower in India, what is the name of that person? Neeraj Chopra ji. So Chopra is the right answer. So option B, Neeraj Chopra is the right answer to this question. Moving to the next question. So Entrepreneurship Development Conclave 2025 was been recently held in January 2025. We have to answer two things here. First thing is that what was the theme of this event? Second thing is which organization is responsible for organizing this conclave, right? So guys, when we talk about the name of that particular part, so we are talking about Entrepreneurship Development Conclave 2025. So what was the theme? So guys, as let me tell you that during this particular conclave we have focused on enhancing and boosting the productivity of animal husbandry and dairying. So basically it is a department of animal husbandry and dairying which has come up with this particular conclave, and the theme of this particular conclave was empowering entrepreneurs transforming livestock economics. That is the right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली दिया गया था ड्यूरिंग द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. किसे दिया गया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी? यश चोपड़ा. यश चोपड़ा जी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बहादुर सिंह सागू, जो एक 2-टाइम ओलंपियन और फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन है. सो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया. आपके सामने क्वेश्चन है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया हु आल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फॉर 3 consecutive terms. What is the name of this person? So Bahadur Singh Sagu ji has replaced Adil Sumriwala
as the president of the Athletic Federation of India, and option A is the right answer. Next question is about the logistics ease across different states 2024 report, guys. So we have covered this report in a very detailed manner in our session. This report basically assesses the logistic performance of the states and duties of our country, and it has been launched on the lines of Logistic Performance Index of the World Bank. So this report evaluates logistic performance across 5 key pillars. Let me tell you guys, the very first statement is wrong. Why? Because there are 4 key pillars which are being used to assess states and duties under the Leeds report. So first statement is incorrect. Second statement, this report categorizes the states and duties in the 3 different categories, that is achiever, fast mover, aspirer. Absolutely right. Third statement, this initiative is launched by Ministry of Commerce and Industry, and first edition was launched in which year? 2018, on the lines of World Bank's Logistic Performance Index. So this statement is also right. What is the right answer? Option 2 and 3, statement 2 and 3 are correct. That means option B is the right answer. So what are these 4 pillars which are being used by this report? That is logistic infrastructure, logistic services, operating and regulatory environment, sustainable logistics. So these are the 4 key pillars which are being used to evaluate logistic performance, right? This is the right answer. अगर हम बात करते हैं इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की, तो दे आर बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक्ड ग्रुप, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप, यूनियन टेरिटरीज. लाइक कोस्टल ग्रुप में कौन से स्टेट्स होंगी? जो हमारे कोस्ट पे है, ठीक है, कोस्टल लाइन पे जो है, जो समुद्री तट से जुड़ी हुई है. उसका लैंडलॉक्ड ग्रुप, वो स्टेट है जिनके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, राइट? सो गाइस, हियर वी आर basically we cannot remember the name of all the states, but yes, just if you it is really possible for you, just try to remember about these achievers only, right? So but before that you are only required to remember that which ministry is launching this report और कौन सी organization की major report पे ये aligned है, कितने pillars को इस्तेमाल किया गया to assess the states and duties, what are the name of those pillars, पहला एडिशन कब लॉन्च हुआ था, ये कौन सा एडिशन है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद करनी चाहिए इस रिपोर्ट से. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024. तो अगेन एक रिपोर्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं अबाउट दिस ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स. पहली स्टेटमेंट, दुबई को रैंक हमने किया एज 8th वर्ल्ड वाइड एंड द फर्स्ट इन द मिडिल ईस्ट इन द GPCI 2024 फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर. एब्सोल्युटली राइट. दिस इंडेक्स इवैल्यूएट सिटीज अंडर 6 कैटेगरीज. क्या है वो कैटेगरीज? इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लिवेबिलिटी. एब्सोल्युटली राइट. ये तीनों इन 6 कैटेगरीज का पार्ट है. इसके बाद आता है कि इसको पब्लिश किसने किया? इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. गाइस, लेट मी टेल यू दैट द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली नॉट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बट अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट organization which releases this report? It is Japan's Mori Memorial Foundation. And when we talk about the top 5 performers in top 5 cities in these global rankings, so London is the one which is on the top, followed by New York, Tokyo, Paris and Singapore. So these are the top 5 performers in the global power city index. That is the right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड ब्रेल डे. तो ये कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं और we commemorate the birth anniversary of which personality? Let me tell you that it is the same person जिनके नाम पर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. एंड बेसिकली दैट ब्रेल इज अ टेक्टाइल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इंपेयर्ड. लेट मी गिव यू वेरी स्मॉल कॉन्टेक्स्ट गाइस. लाइक आपके सामने स्क्रीन है एंड यू आर एबल टू रीड एवरी फॉन्ट विच इज प्रोवाइडेड हियर, राइट? सो ऑल द लेटर्स, all the alphabetical letters plus the numbers, we are basically denoting them with the help of 6 dots, right, in the braille, which is a tactile script, right? In this braille what exactly is done is the people who are semi blind, who are partially blind or the fully blind people, they are able to basically read these letters that we also read, right? But with the help of these 6 dots, these are grooved 6 dots which are there, and basically it helps them to study each and everything that we are also studying through the fonts, to the written fonts, right? I hope this is clear. So Louis Braille is the name of that creator of this Braille tactile script, and on which date the birth anniversary is there for this person, that is 4th January. So option A is the right answer. Next question. So Justin Trudeau has resigned from the role of Prime Minister of Canada. He was the dash youngest Prime Minister in Canadian history. So he was the
Second youngest prime minister in Canadian history. The youngest one is Joe Clark. The youngest one was Joe Clark. Okay. Next question. India's first organic fisheries cluster was launched in which of the following states under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? To promote sustainable fisheries, what is the name of that state? It is Sikkim. Option C. Next question is about, with reference to the collaboration between Mira Bhayandar Municipal Corporation and the Women Entrepreneurship Platform of Niti Aayog, consider the following statements. So guys, an MOU was been signed between Women Entrepreneurship Platform of the Niti Aayog and Mira Bhayandar Municipal Corporation, and you have to go through these statements and identify the correct statements. Let me tell you that the name of that initiative is Faral Sakhi, which creates permanent employment opportunities for women by engaging them in the production and sale of traditional festive snacks. What is this Faral Sakhi, guys? Faral is basically a festive snack which is being produced in Indian state of Maharashtra, and Sakhi is that women entrepreneur which is involved in the production and sale of this Faral. So that's why Faral Sakhi initiative has been launched. Now when we talk about Women Entrepreneurship Platform, it was incubated by Niti Aayog in 2018 and it was then transitioned to public-private partnership in 2022 and not 2020. That's why this statement is incorrect. Third statement, this initiative includes comprehensive training and support for scaling women entrepreneurs ventures and snack production sustainably. Absolutely right. So statement 1 and 3 are right. Option B will be the right answer. Moving to the next question, that is on the Gramin Bharat Mahotsav 2025. So three statements are being given. We have to identify the correct statements which are here. So Gramin Bharat Mahotsav, अभी हमने entrepreneurship की बात की थी, तो जो entrepreneurial spirit है in the rural India, उसको celebrate करने के लिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को कंडक्ट किया गया. It was inaugurated by Prime Minister in New Delhi. Absolutely correct. जो थीम है इस इवेंट की, इट वाज बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत. गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जो रूरल इंडिया है, जो विलेजेस हैं, दे आर द grassroots level of our society, and that's why these basic units, when they will be developed, then whole India will also become developed by 2047. That's why this is the right answer. Third statement, that the event is an initiative of Minister of Rural Development in collaboration with NABARD. Guys, NABARD is there behind the launch of this event, but I really know that you must be very much confused as rural India की बात हो रही तो rural development की वाली ministry आएगी, but no, here it is the Department of Financial Services which has launched this event along with NABARD. So third statement is incorrect. Right answer is option A, that is 1 and 2 only. अगर हम बात करें इस इवेंट के मोटो की, तो द मोटो ऑफ द इवेंट वाज गांव बढ़े तो देश बढ़े. दैट इज द मोटो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर हियर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉमनली यूज्ड फॉर पेन एंड फीवर हैज बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय द CSIR टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स. लेट मी टेल यू गाइस, ये काफी कॉमन ड्रग है. जो जब भी हमें पेन होता है, फीवर होता है, हम उस ड्रग को लेते हैं और उस मेडिसिन को लेते हैं. डॉक्टर भी हमें वही मेडिसिन सजेस्ट करते हैं. और साथ ही साथ लेट मी टेल यू दैट अर्लियर इंडिया वाज रियली रिलायबल ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट दैट मेडिसिन, बट नाउ CSIR ने इंडिजिनसली इसको बना दिया है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन और ड्रग इज पैरासीटामोल. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. सो गाइस, अभी हमने बात की थी फरल सखी इनिशिएटिव की, जिसको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया था. अभी इन्होंने एक और पार्टनरशिप की है. इस बार इन्होंने की है 24/7 न्यू रिटेल चेन न्यू शॉप के साथ टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर इट्स अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम. उसका क्या नाम है गाइस? व्हाट वी आर डूइंग विद दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, वी आर एम्पावरिंग द विमेन, और विमेन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर. सो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द नेम ऑफ दैट initiative? That will be empower her. So option B, empower her biz सपनों की उड़ान is the right answer. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. So Chief Minister of UP has inaugurated All India Radio's special dash which is dedicated to Mahakumbh 2025 at Prayagraj. The channel operating at FM 103.5 megahertz is an initiative of which organization? तो हमने बात की थी अपने सेशन के अंदर कि महाकुंभ, जो लोग महाकुंभ नहीं जा सकते हैं, to provide them the real time update which are taking place in Mahakumbh, the government has come up with this initiative, and through the radio we will be able to disseminate those activities whatever happening in Mahakumbh. So ये कैसे होगा guys? रेडियो में हम किसका
इस्तेमाल करते हैं वाणी का, अपनी वॉइस का, राइट। तो कुंभ की वाणी को क्या कहेंगे? कुंभ वाणी। और ये किसका इनिशिएटिव है? प्रसार भारती का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बिलीव कि इस तरह लिंक करके आप डेफिनेटली चीजों को याद कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज ऑन द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, बट व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कन्वेंशन? दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। गाइस अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये हम हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? इट इज द सेम डेट व्हेन महात्मा गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इट वाज दैट डेट, and that's why we celebrate प्रवासी भारतीय दिवस। बट जो कन्वेंशन है, दैट दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इन भुवनेश्वर उड़ीसा, and the theme of this event is डायस्पोरा's contribution to विकसित भारत। गाइस एक चीज आप देख सकते हैं कि विकसित भारत, दैट इज डेवलप्ड नेशन पर, डेवलप्ड इंडिया पर काफी ज्यादा फोकस है, और मैक्सिमम जो थीम्स हैं इसी इवेंट के अराउंड है। अगर एग्जाम में आपको इवन कोई थीम नहीं याद रहती है, सो ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स आर रिलेटेड टू द विकसित भारत। अगर ऐसा कोई इवेंट आया, तो अगर विकसित भारत है तो आप बिल्कुल एक गेस कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेटिव गेस है ये, ठीक है। सो आई थिंक दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द विश्व हिंदी दिवस, अ वर्ल्ड हिंदी डे। इट इज दैट डे ऑन विच for the very first time in the United Nations conference the Hindi language was being used. So we have to identify on which date we celebrate this day and what is the theme. So the date is basically 10th of January when we celebrate this Vishwa Hindi Divas, or we can say World Hindi Day, and the theme is Hindi, a global voice of unity and cultural pride. Option B is the right answer. Next question, guys. So New Zealand cricketer Dash, who holds the record for the highest individual score in ODI World Cup, has announced his retirement. What is the name of this person? The name is Martin Guptill. Option C. Next question is about the working group for the base revision of wholesale price index. Guys, we all know कि हम wholesale price index का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम इसको लॉन्च करते हैं तो एक बेस ईयर पे करते हैं, बट गवर्नमेंट ने अब सोचा है कि उसको क्यों ना अपडेट किया जाए। उसी के ऊपर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट, बेस ईयर जो है चेंज होगा 11-12 से 22-23, विच इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट, जो वर्किंग ग्रुप बनाया है इसके लिए, तो उसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद जी, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ग्रुप इज हैविंग टोटल 24 मेंबर्स। गाइस यहां पर थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि 18 मेंबर्स हैं इसके, 24 नहीं है। देयर आर ओनली 18 मेंबर्स एंड दे विल फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट विद इन 18 मंथ्स। एब्सोल्युटली राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एज 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so this is absolutely correct, guys. Let's move on to the next question. Next question is about the National Program for Organic Production. तो 8th edition इस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया। आपके सामने अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द 8th edition of the program has introduced key amendments to enhance transparency and promote ease of operation for stakeholders. Absolutely right. सेकेंड स्टेटमेंट, गाइस, एज द नेम सेज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मतलब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। Under the 8th NPOP, certification requirement will be there for organic power groups, and now this process has been simplified, which is absolutely right with respect to this particular program. Then the third statement is the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority will serve as the secretariat for NPOP. Absolutely right, this will be serving as the secretariat. So option D is the right answer, as all these statements are correct. अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड जाने एनपीओपी का, तो इसको 2001 में लॉन्च किया गया था टू स्ट्रेंथन इंडियाज ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम, और यहां पर APEDA इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ एनपीओपी, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलीज अ टैक्स डेवोल्यूशन ऑफ डैश टू स्टेट गवर्नमेंट्स एज अगेंस्ट द डेवोल्यूशन ऑफ 89,086 करोड़ इन दिसंबर 2024। तो जनवरी 2025 में डेवोल्यूशन किया है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका क्या अमाउंट है, कितना परसेंटेज of taxes that government has collected, the union government has collected, is being devolved among the states. That is the next question. Third question is, among all the states, which state has received the highest amount of this devolution? So let me tell you guys, the amount was 1,73,030 crores. 41% of the total tax collected by the union government is being given to the states, and Uttar Pradesh has received the maximum amount of devolution. So option D is the right answer.
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इंडिया एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया एआई मिशन के अंडर एक पार्टनरशिप की, और उसके अकॉर्डिंग, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए, वी हैव टू गो थ्रू दी स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो पहली स्टेटमेंट है कि ये जो कोलैबोरेशन है, इट विल बी ट्रेनिंग, अंडर दिस दे विल बी ट्रेनिंग 5 लाख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड डेवलपर्स बाय 2026, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द एआई प्रोडक्टिविटी लैब विल बी सेट अप इन 20 national skill training institutes across 10 states to empower students and educators, absolutely right. Third statement is that Microsoft will support 10,000 AI startups under the India AI mission. Let me tell you guys that they will be supporting 1000 AI startups and not the 10,000. So third statement is incorrect. Right answer is option A, that is statement 1 and 2 are absolutely correct here. Moving to the next question, guys. So we all know about the FAME 2 scheme which the government has launched to enhance the electric mobility in our country. But under the FAME 2 scheme, what is the number of electric vehicles that have been incentivized till now as per the recent data? And these are 16.15 lakh vehicles. That is the right answer. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल, दैट इज बैंकनेट। तो बैंकनेट का 2.0 वर्जन लॉन्च किया था रिसेंटली। बैंकनेट एक ऐसा पोर्टल है जहां पर जितना भी ऑक्शन करता है बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जितनी भी वो प्रॉपर्टीज हैं फॉर द ऑक्शन, उनकी डिटेल्स बैंकनेट पर प्रोवाइड की जाती हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहां करेक्ट हैं। सो द पोर्टल कंसोलिडेट्स ई ऑक्शन प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इट विल इंक्लूड लिस्टिंग्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स एंड मशीनरी, बट एक्सक्लूड द इंडस्ट्रियल लैंड। लेट मी टेल यू गाइस, दे विल इंक्लूड द industrial land. So second statement is incorrect. Third statement, it will feature an automated payment gateway and KYC tools for seamless transaction, absolutely right. So statement 1 and 3 are correct. Option B will be the right answer. Absolutely right. So just the student option B को आंसर करेक्ट किया है, guys, you have gained another positive mark in this session, right? I hope कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं सभी के काफी अच्छे मार्क्स आएंगे आज के सेशन के अंदर, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल में सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज भुवनेश कुमार, ऑप्शन डी। That is right answer. Next question. So Indian Navy is set to commission 3 frontline combatants at the Naval Dockyard, Mumbai, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, like one of them is the lead ship of project 17A, one of them is the 4th and final ship of project 15B, and one of them is the 6th and final submarine of Scorpion class project. What is the name of these combatants? These are Nilgiri, Suraj and Vagshir, that is option C. अगर आपने ये न्यूज को देखा था तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, और वहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है डी गुकेश जी को। अब ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। शूटिंग, चेस, हॉकी, पैराथलीट, athletics or tennis. So it is hockey with which they are associated. That is the right answer. Now another question from National Sports Awards. So यहाँ पर Arjun Award Lifetime for Outstanding Performance has been given in sports and games. So they were presented to one for athletics and one for para swimming. What are the name of these people? That is what we have to identify here. Let me tell you, for athletics it was Sucha Singh who has been awarded, and for para swimming it was Murlikant Rajaram Petkar. अगर आपने चंदू चैंपियन मूवी को देखा है तो आप मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पहचानते होंगे गाइस, राइट? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इंडियाज मेट्रो नेटवर्क हैज एक्सीडेड डैश टोटल लेंथ इन मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो चाइना और यूएस के बाद इंडिया का जो मेट्रो नेटवर्क है वो यहां पर उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज आर्टिकल। सो गाइस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, एंड आई बिलीव कि आज का सेशन आप सभी के लिए काफी अच्छा रहा, एनर्जेटिक रहा, यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा, और आप सभी की अच्छी खासी रिवीजन हो गई है, राइट? और अब आपके सामने होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट एग्जैक्टली योर स्कोर इज, राइट? दिस इज द मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्कोर के बेसिस पर व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल ऑफ आवर प्रिपरेशन। ओके, सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली
post your queries in the comment section, or you can share your queries at hello@edutab.co.in, or you can call us at 814-620-7241. So guys, thank you for joining this particular session. I will keep on coming up with such more sessions. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.